जय जगन्नाथ। आज आम किसी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करिबा। चलंतु स्टार्ट करिबा आज सेशन। ए toddler suspected of rheumatic fever is admitted to the pediatric unit. टॉडलर गोटे तार कौन सस्पेक्ट है ना rheumatic fever सस्पेक्ट है एंड से एडमिट है पेडियाट्रिक यूनिट रे. ए नर्स इज obtaining a health history of a child. Which element will be considered as most important? जितेबाला पेशेंट आम हिस्ट्री नवा कौ एलिमेंट आमर मोस्ट इम्पोर्टाट रोजिया वॉमिटिंग सिंस पास्ट 3 days, फेरेंजाइटिस 2 weeks back, स्टमक एक सिंस 1 week, डायरिया. र्यूमेटिक फीवर रो कोज कौन रोची ना ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस. इटा कौन रोचे हमरो ना इट ऑकर्स 2 to 4 weeks after initial sore throat. तमरो यार आंसर कौन रहिबो ना फेरेंजाइटिस 2 weeks back. nausea vomiting since past 3 days, stomach ache since 1 week and diarrhea. ए तीनटा हमरो रहउची कोन ना जीआई सिम्पटम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. A patient is in hypovolemic shock. The nurse administer 500 ml of normal saline. What is the osmolarity of sodium in normal saline? सोडियम रो osmolarity केते? आमरो नॉर्मल सलाइन रे जो सोडियम रहउची तारो osmolarity केते? 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. नॉर्मल सलाइन रे हमरो कोन रहउची? नॉर्मल सलाइन रे सोडियम प्लस क्लोराइड. तामरो सोडियम रो osmolarity केते रहउची ना 154, क्लोराइड रो केते रहउची ना 154. तामरो एठी सोडियम रो पचारि छी कोटा राइट आंसर होबो ऑप्शन सी 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. A patient has undergone thyroidectomy. पेशेंट रे गुटे कोन हेची ना थायराइडोक्टोमी हेची. The nurse monitor the patient in post-operative room. नर्स पेशेंट को मॉनिटर करछे पोस्ट ऑपरेटिव रूम रे. Which of the following signs indicate damage to the parathyroid gland? को साइन हमको इंडिकेट करिवो कि पेशेंट रो parathyroid gland टा डैमेज हेची बोली. hoarseness of voice, neck pain, tingling around the mouth, respiratory distress. parathyroid gland हमरो कोन करूची ना it regulates कैल्शियम लेवल. हमरो जते बेले थायराइडोक्टोमी होची सेते बेले कोन होची ना एक्सीडेंटली रिमूव हे जाउची. एक्सीडेंटली रिमूवल ऑफ पीटीएच ग्लैंड. तो सही केस रे हमरो कोन होची ना हाइपोकैल्सीमिया होची. हाइपोकैल्सीमिया रो साइन कोन आसी बताले हमरो एठी ना टिंगलिंग अराउंड द माउथ. hoarseness of voice कोन होबो ना डैमेज टू द recurrent laryngeal nerve. neck pain कोन रहउची ना पोस्ट ऑफ
पोस्ट पेन रोचे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को केस रे ना हेमोरेज और स्वेलिंग। A 3-day-old neonate is crying continuously. On asking the mother, informed that the newborn has not passed meconium till now. The newborn will be suspected for pyloric stenosis, Hirschsprung disease, celiac disease, intussusception. यार करेक्ट आंसर कौन आसीबो ना हिस्प्रंग डिजीज। हिस्प्रंग डिजीज कौन रोचे हमर फेलियर टू पास meconium with 20 to 48 hours after delivery. यार कॉज कौन रोचे ना caused by congenital absence of ganglionic cells. पाइलोरिक स्टेनोसिस रे हमर कोन देखा जाउचे ना प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। सिलियाक डिजीज कोन सिलियाक डिजीज हमर रोचे ऑटो इम्यून रिएक्शन टू gluten containing food. इंटुससेप्शन रे कोन होची सॉसेज शेप मास। A woman using diaphragm for contraception should be instructed to leave it in place for at least how long after intercourse? 6 hours, 12 hours, 1 hour, 24 hour. जेते बेले हमरो डायफ्राम यूज होची सेटा केते समय पर्यंत हम रखि परिबा ना 6 hours। एटा जदी मोर देन 24 hours रुहे मोर देन 24 hours रेले कोन होबो ना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। A nurse is caring for a patient with increased ICP. गोटे नर्स पेशेंट रो केयर करूची जो पेशेंट रो की आईसीपी इंक्रीज अछि। द नर्स एडमिनिस्टर्ड मैनिटोल टू रिड्यूस आईसीपी। नर्स कोन करूची ना पेशेंट को मैनिटोल एडमिनिस्टर करूची। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स shows the effectiveness of mannitol? Increased temperature, decreased urine output, increased urine output, decreased pulse rate. मैनिटोल कौन करूची ना इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। मैनिटोल हमर होची ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक जोटा कि हमर इंक्रीज करूची यूरिनेशन को। A bedridden patient is having 3rd-degree pressure ulcer. On assessment, the nurse found that the pressure ulcer is healing. Which of the following dietary recommendation will be given by the nurse? गोटे बेडरिडन पेशेंट अच्छी जो पेशेंट रो की 3rd-degree प्रेशर अल्सर हेची असेसमेंट रे कोन देखा गला ना पेशेंट रो अल्सर टा हीलिंग होची। को डायटरी रेकमेंडेशन टा हमरो रहिबो पोटैटोस एंड एग्स, राइस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, सैलड, साइट्रस फ्रूट्स। यार करेक्ट आंसर कोन रहबो ना ऑप्शन ए पोटैटो एंड एग्स। A patient with resolved hemothorax is planned for
आईसीडी ट्यूब रिमूवल कौन है ना गोटे पेशेंट रो हेमोथोराक्स होता हेमोथोराक्सटा रिजल्व होती एबे तार प्लान कौन होची ना आईसीडी ट्यूब जो थिला ताको रिमूव करिया पई which instruction should be given by the nurse to the patient during ICD removal ICD removal time रे को instruction हमें patient को दबा avoid Valsalva maneuver hyperventilate the patient before removing the chest drainage tube inhale the air when the tube is pulled out exhale and bear down तो पेशेंट को कौन हमें इंस्ट्रक्शन दबा ना एक्सेल एंड बियर डाउन एवॉइड भालसल्वा मैनूवर देछि इटा हमरो एवॉइड होबनी भालसल्वा हमरो रिक्वायर्ड होबो हाइपरवेंटिलेट द पेशेंट बिफोर रिमूविंग द चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब इटा करले कौन होबो ना रैपिड ब्रीदिंग इंक्रीज्ड एयर back into the chest cavity आमे जदि पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करिबा कोन होबो तारो ना ब्रीदिंग टा रैपिड होबो जोटा कि हमरो एयर टा चेस्ट कैविटी को एंटर करिवो पुनी इनहेल द एयर व्हेन द ट्यूब इज पुल्ड आउट इटा करले कोन होबो ना क्रिएट होबो नेगेटिव प्रेशर जोटा कि कौन कर जते बेले हमें ट्यूब पुल करिबा ट्यूब जते बेले पुल करिबा सेते बेले कौन होबो ना आउटसाइड एयर एंटर इन प्लूरल स्पेस आउटसाइड एयर जते बेले प्लूरल स्पेस रे एंटर होबो तार कौन कॉम्प्लिकेशन होबो ना न्यूमोथोरैक्स A patient is experiencing dyspnea and restlessness. Which nursing position is suitable for the patient? गोटे पेशेंट रो कोन होची ना डिस्निया होची एंड पेशेंट कोन होची रेस्टलेस नची व्हिच पोजीशन को पोजीशन ता हमें पेशेंट को दबा सुइटेबल को पोजीशन ता सुपाइन लेटरल सेमीफाउलस नन ऑफ द अबव पेशेंट रो डिस्निया होची एंड रेस्टलेसनेस अछि त हम पेशेंट को सेमीफाउलर पोजीशन दबा टू इंप्रूव ऑक्सीजनेशन पाई A nurse is inserting 16 French Follis catheter to a male patient. गोटे नर्स कौन करुचे ना 16 फ्रेंच रो फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करुचे गोटे मेल पेशेंट रो in order to keep the catheter secure the nurse will fix it at catheter को सिक्योर करिया पई हमें कैथेटर को कोडी फिक्स करिबा fix it nowhere fix it upwards to the abdomen fix it lateral to the thigh fix it downward to the thigh तो मेल पेशेंट रो कैथेटर कोडी फिक्स करिया माने fix it upwards to the abdomen upper to the abdomen ले फिक्स करले कोन होबो ना prevent tension on the urethra fix it to lateral to the thigh fix it downward to the thigh eta for female case रे next question देखिबा a nurse is performing primary assessment RTA patient गोटे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट रो हमें प्राइमरी असेसमेंट करूचे which of the following is an alarming sign to receive attention कोस्टा हमरो अलार्मिंग साइन रहइबो जोटा कि हमें पेशेंट को अटेंशन दबा क्लियर बायलेटरल लंग साउंड्स SpO2 90% नॉर्मल प्यूपिलरी रेस्पॉन्स GCS स्कोर 14 तो क्लियर बायलेटरल नॉर्मल साउंड हमरो नॉर्मल अछि नॉर्मल प्यूपिलरी रेस्पॉन्स भी नॉर्मल अछि GCS स्कोर भी 14 हमरो नॉर्मल अछि त हमरो कोउटा अलार्मिंग साइन रहइबो ना SpO2 90% नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा A primary gravida 37 weeks presented with complete central placenta previa and heavy bleeding per vagina. The fetal heart sound was normal at the time of examination.
The best management option for her is ଗୋଟେ 37 ୱିକ୍ର ପ୍ରାଇମେରୀ ଗ୍ରାଭିଡା ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠି ପେସେଣ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ପ୍ରିଭିଆ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଭି ଭାଜାଇନାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି, ଫିଟାଲ ହାର୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ ଅଛି। କୋଉଟା ଆମର ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିବ? ଏକ୍ସପେକ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସିଜେରିଆନ ସେକ୍ସନ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ଫର୍ସେପ୍ ଡେଲିଭରି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ଭାଜାଇନାଲ ଡେଲିଭରି। ତ ଆମର ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ନା ସିଜେରିଆନ ସେକ୍ସନ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଷ୍ଟେବୁଲ ପେସେଣ୍ଟରେ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ଫର୍ସେପ୍ ଡେଲିଭରି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ଭାଜାଇନାଲ ଡେଲିଭରି, ଏଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟର ହେଭି ଭାଜାଇନାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ରହିବ କଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡିକେସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। If LMP of a primary gravida is August 5, 2021, then what is the EDT? March 5, 2022, May 12, 2022, June 12, 2022, May 5, 2022. ନେଗେଲ୍ସ ରୁଲ୍ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି? ନେଗେଲ୍ସ ରୁଲ୍ରେ ଆମେ EDT କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ନା LMP ପ୍ଲସ୍ 9 month प्लस 7 days। ଏଠି ଆମକୁ LMP କେତେ ଦେଇଛି ନା ଅଗଷ୍ଟ 5 ଅଗଷ୍ଟ ରେ ଆମେ 9 month ଏଡ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ 7 days ଏଡ୍ କରିବା। 5 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମର 9 month ଏଡ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଆମର ନା ମେ 5, ଏଠି ଆମେ 7 days ଏଡ୍ କରିବା ତ ଆମର କେତେ ଆସିବ ନା ମେ 12, 2022। ଆମର ଆସିବ ପେସେଣ୍ଟର EDD। ଅପସନରେ ଅଛି ଅପସନ B। A patient with massive blood loss is admitted in emergency setting। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ତାର ହେଇଛି massive blood loss, ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ କି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛି। Which of the following finding in cardiac monitor will reveal hypovolemic shock? कार्डियाक मॉनिटरे कौ फाइंडिंग आमे देखिबा जे पेशेंटर हाइपोवोलेमिक शॉक ହେଇଛି। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ब्राडिकार्डिया, टैकिकार्डिया हाइपोटेंशन, ब्राडिकार्डिया हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया हाइपरटेंशन। ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାଇପୋଭୋଲେମିକ ଶକ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟैकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। Physiological anemia during pregnancy is a result of increased blood volume, increased detoxification demands on the mother's liver, decreased dietary intake, decreased erythropoiesis after the first trimester। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रे फिजियोलॉजिकल एनीमिया आमे का कहूछु ना जेतेबेले इनक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम होची सेतेबेले फिजियोलॉजिकल एनीमिया होची। कोन पई ना हेमोडाइल्यूशन होची। An emergency department nurse prepare to treat a child with acetaminophen overdose। emergency department रो nurse कोन प्रिपेयर करछि ना गोटे पेशेंट हम पाको आछि तारो acetaminophen overdose ହେଇछि। The nurse review prescription expecting that which of the following will be prescribed। acetaminophen रो एंटीडोट कोन रहइबो? प्रोटामाइन सल्फेट, सोकिमर, विटामिन के, एसिटाइल सिस्टीन। acetaminophen overdose ले हमें कोन दबा पेशेंट को ना एसिटाइल सिस्टीन। प्रोटामाइन सल्फेट हेपारिन ओवरडोज हेले हेपारिन ओवरडोज। सोकिमर कोन आसीबो ना लीड पॉइजनिंग हेले एंड विटामिन के वारफारिन रो ओवरडोज। A patient with burns to receive in the burn ICU
गोटे पेशेंट रो बर्न हेची पेशेंट कोठी की रिसीव हैला ना बर्न आईसीयू को एडमिट हैला unfocused assessment of the gastrointestinal system the nurse will watch for paralytic ileus gastric distension curling ulcer diarrhea ଯେତେବେଳେ ବର୍ନ ପେସେଣ୍ଟର ଆମେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ନା कर्लिंग अल्सर ऑप्शन सी राइट आंसर फेलियर ऑफ यूटेरस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज इज नोन एज इन्वोल्यूशन सब इन्वोल्यूशन प्यूपेरियम रिट्रैक्शन यूटेरस जितेबाला तार नॉर्मल साइज को आसु पारु नाही फेलियर होची ताले ताको कोन कहा जाउची ना सब इन्वोल्यूशन इन्वोल्यूशन कोन जितेबाला यूटेरस टा नॉर्मल साइज को आसुची यूटेरस रे नॉर्मल साइज को होची ताको इन्वोल्यूशन कहा जाउची प्यूपेरियम कोन ना 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ एठी कोन होची प्यूपेरियम रे ना मदर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन return to the non-pregnant state non-pregnant condition next question देखिबा a nurse is monitoring a preterm newborn for sign of respiratory distress syndrome the nurse monitor the infant for infant रो को साइन हमको इंडिकेट करिवो ना तार रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होची एक्रोसाइनोसिस एम्फाइसीमा एंड इंटरस्टिशियल एडिमा एक्रोसाइनोसिस एप्निया न्यूमोथोरैक्स एंड ग्रंटिंग बैरल शेप्ड चेस्ट एक्रोसाइनोसिस एंड ब्राडिकार्डिया साइनोसिस टैकिप्निया रिट्रैक्शन ग्रंटिंग रेस्पिरेशन एंड नाजल फ्लैरिंग आरडीएस रे सिम्पटम्स हमरो कोन रहइबो साइन सिम्पटम ना साइनोसिस टैकिप्निया रिट्रैक्शन ग्रंटिंग रेस्पिरेशन एंड nasal flaring a nurse is caring for a patient with a diagnosis of pemphigus on assessment of the client the nurse looks for which hallmark sign characteristic of this condition pemphigus ro hallmark sign kon rahibo turner sign joystick sign nikolsky sign trousseau sign पेम्फिगस कौन पेम्फिगस ऑटो इम्यून स्किन डिजॉर्डर that cause painful blisters and sore on the skin and mucous membrane पेम्फिगस रो हॉलमार्क साइन कोन रहइबो ना निकोल्स्की साइन टर्नर साइन को केस रे देखा जाउची ना एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जोस्टिक साइन एंड ट्रोसाउ साइन देखा जाउची हाइपोकैल्सीमिया रे a nurse reviewing the electrolyte level of a patient notes that the potassium level is low when administering the IV potassium chloride the nurse ते पेशेंट रो हमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखिले पेशेंट रो कोन अछि ना तारा पोटेशियम लो अछि जेतेला हमें पेशेंट को आईवी पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर करिबा को जिंसटा हमें करिबा इंजेक्ट इट एज ए बोलस यूज ए फिल्टर इन द आईवी लाइन dilute it and infuse through infusion pump apply cool compress to the IV site during administration potassium chloride हमें
केमती एडमिनिस्टर करबा ना डाइल्यूट इट एंड इन्फ्यूज थ्रू इन्फ्यूजन पंप कोन पई ना टू प्रिवेंट कार्डियक डिसरिथमिया A child is admitted in hospital with a diagnosis of lead poisoning and chelation therapy is prescribed. The nurse would prepare to administer which of the following medication? गोटे पेशेंट एडमिशन है कौन तार लीड पॉइजनिंग डायग्नोसिस होती डॉक्टर कौन एडवाइस करचंती ना चिलेशन थेरापी को मेडिकेशन टा हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करिबा इपिकैप सिरप एक्टिवेटेड चारकोल सोडियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट लीड पॉइजनिंग रे चिलेशन थेरापी कौन आसीबो ना कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेड EDTA A nurse is performing pin side care on a patient in skeletal traction पेशेंट रो स्केलेटल ट्रैक्शन थिला पेशेंट रो हमें पिन साइड असेसमेंट करिबा व्हिच फाइंडिंग वुड बी नॉर्मल व्हेन असेसिंग द पिन साइट लूज पिन साइट क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द पिन साइट purulent ड्रेनेज फ्रॉम द पिन साइट रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द पिन साइट कोटा हमरो नॉर्मल रहइबो ना क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द पिन साइट purulent drainage from the pin side and redness swelling around the pin side कौन इंडिकेट करिबो ना एटा हमरो क्लासिकल साइन ऑफ इन्फेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा A nurse is caring for a patient who has been placed in box extension traction The nurse performs a complete neurovascular assessment of the affected extremity and plans to assess vital signs and bilateral lung sounds, warmth of the skin and the temperature in the affected extremity, pain level and for the presence of edema in the affected extremity, color, sensation, movement, capillary refill and pulse of the affected extremity. जेतेले पेशेंट रो बॉक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन थिबो हमें कोन न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट करिबा पेशेंट रो ना कलर सेंसेशन मूवमेंट देखिबा कैपिलरी रिफिल टाइम देखिबा पल्स देखिबा जोटा कि हमर अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी रे थैंक यू आपण मानको आज रो सेशन केमती लागिला कमेंट सेक्शन रे कहिबे